We have a very special guest with us in Uttar Pradesh at Lucknow. Welcome to ET Now, Mr. जयवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अयोध्या हम सब ने देखा किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ, टूरिज़्म पे किस तरीके से सरकार का बढ़ावा है। अब आगे जाकर सरकार की प्राथमिकता अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें और टूरिज़्म में बात करें तो किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ यदि यूपी को लेकर हम लोग बात करें तो धार्मिक टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म को लेकर के उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाओं का प्रदेश है। देश और दुनिया का अपूर्व समर्थन, आस्था, श्रद्धा का भाव जी अयोध्या की तरफ उमड़ पड़ा है। हमें खुशी है कि 37,000 करोड़ की परियोजना हमारे अकेले टूरिज्म की उसमें से है। किस तरीके से सरकार ऐसी पार्टनरशिप करना चाहती है कि एक तो इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, लोगों को रोजगार मिले और वहाँ पे बिजनेस बढ़े? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो विभिन्न पॉलिसियों को लागू करके निवेशकों को आकर्षित करने में मैं समझता हूँ नंबर 1 हिंदुस्तान में है। हमें खुशी है कि 37,000 करोड़ की परियोजना हमारे अकेले टूरिज्म की उसमें से है, जिसमें विभिन्न जो हमारा नई टूरिज्म पॉलिसी है उसमें हम लोग जो भी यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं, जो टूरिज्म के लिए 5 स्टार से लेकर के 5 कमरों का छोटा सा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, उन तक को हम लोग सब्सिडी, तमाम इंसेंटिव्स, तमाम कंसेशंस दे रहे हैं। हमारे पास चूका है, कतरनियाँ हैं, तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़ी बड़ी प्राकृतिक रूप से आच्छादित डेस्टिनेशन है यूपी में, वन विभाग के, उनको हम लोग एडॉप्ट करके थेरेपी आयुष विभाग को लगाया हमने। थेरेपियाँ और आयुर्वेद के माध्यम से वो अपने जो स्किल्ड उनके डॉक्टर्स, उनके पैरामेडिकल स्टाफ वो दे रहे हैं। सरकार के इन्वेस्टमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर से तमाम निवेशक हमारी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित हुए हैं और अच्छा खासा निवेश लगातार उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा है। The MSMEs from Uttar Pradesh has been booming. However, when some get helping hand at the right time from the bank, the efforts yield results. He is Rajesh Agarwal. Close to 30 years back, his father got associated with Federal Bank and introduced him to the bank later. His business Coronation Mercantile offers a plethora of range of quality titles and sanitary ware. Our association with Federal Bank goes way back, I guess about 30 years back now. We've been part of Federal Bank. We consider everybody in the bank as our family members. Right. And they go out of the way to help us. So it's been a tremendous help in our growth. The son of Rajesh Agarwal, Arindam Agarwal, is MD of A2 Cricket. He is 28 years old entrepreneur who was introduced to Federal Bank by family. His brand is not only admired globally, but former Indian women cricket team captain Mithali Raj was associated with the brand in last World Cup. The company has manufactured products for more than 40 international players. From day one, Federal Bank has been the bank associated with us, and they've been very helpful. I think more than seamless, to be honest. Through all the transactions that we happen, the foreign remittances, everything is very seamless. The communication is very clear. The systems are very systematic. And even when we've needed capital to grow as a brand, because we've been growing 100% almost every year, they've been great in helping us around and, very, very supportive and efficient, I'd say. The success story is not just about young entrepreneurs, but there are also customers who have been with the bank since inception in Lucknow. Almost about 50 years I've been to there. My main life, I'm right now 68, my 50 years have been associated with the Federal Bank. और एक बहुत बड़ा विश्वास होता है Federal Bank से हमारी 5 पीढ़ियाँ लगातार जुड़ी हुई हैं. So over 5 generations have been associated with the same lender. Yeah, ये बहुत बड़ा विश्वास वो करता है कि 5 पीढ़ियों का विश्वास. The customers has been there with the bank for long time because the relationship is more than business. Well, Federal Bank has been associated with us and my family for over 30 years now. So it's like a best friend in business.
I think that really says it all, because when you have such a strong support with you, especially in business which is full of risk, you're able to take a lot of steps ahead for a brighter future. Naveen Charan is a customer of Federal Bank who started his relationship with Federal Bank by depositing his 1,000 rupees salary into the bank. We had been very long associated with the Federal Bank, maybe for the last 25-30 years. Right when they were having at the Vidhan Sabha Marg, and then they shifted to the new branch. It was one of those branches in the private sector about 25-30 years back, which we used to care about the customers. The success story of customers speaks for itself. The bank has not only grown itself but also enabled other customers to grow who has been associated with the lender for a long time, making it near perfect partner.